Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good evening. Can you hear me? Yes. Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening. So, dear friend, today Good evening, sir. Good evening. very good evening. So you can hear us? Yeah, Okay. fine. So, let's start now. Can you hear me? I am clearly audible. Okay. So, in the previous class, we were discussing about 4 different causes of wind stroke. हम अलग अलग 4 कारणों की बात कर रहे थे. So there might be many different causes of the wind stroke, and we have seen this. हमने ये देखा था पिछली क्लास में. We have seen this, right? Kidney, and in the first we have seen the inadequate rest, person is not sleeping enough, excessive sexual intercourse, emotional stress creating kidney and kidney insufficiency. So there is a no nourishment of the liver yin, liver yang rising, liver bent and creating paralysis. Finally, person got paralysis. Whatever the reason, finally person got paralysis. कि व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया. The second thing we have discussed, irregular diet. Person is not taking enough diet, physical overwork, then spleen deficiency, and finally person is getting paralysis in the last. The third we have seen excessive sex and improper rest, inadequate rest, kidney deficiency, bone marrow deficiency, and finally person getting paralysis. And in the fourth conditions, again physical overwork, inadequate sleep, rest, weakness of the channel, and person is getting paralysis. Whatever the cause, we have discussed, the finally person is getting paralysis. किसी भी कारण से हम आगे बढ़े, लेकिन आगे चल के हुआ क्या, पैरालिसिस हुआ. फिर मैंने कहा था कि अब हमें इसका प्रोटोकॉल बनाना है, हमें इसके प्रोटोकॉल्स का निर्माण करना है. बट आई हैव नॉट डिस्कस द प्रोटोकॉल. बट व्हाटएवर द रूट कॉज, अभी हमारे सामने पेशेंट जो खड़ा है उसको तो पैरालिसिस है, उसको हेमीप्लेजिया है. हमें तो दिख रहा है भाई इसका हेमीप्लेजिया. अब हम क्या करें? ये तो बाद में आएगा भाई, स्प्लीन डेफिशिएंसी है कि किडनी डेफिशिएंसी है कि किडनी ने लिवर को नरिश नहीं किया. ये तो सब हमारे दिमाग में कुछ समय के बाद आएगा, राइट? इमीडिएटली विल सी, ओ द पर्सन इज पैरालिटिक, हेमीप्लेजिक, राइट? देन हाउ टू मेक द प्रोटोकॉल? हम प्रोटोकॉल का निर्माण कैसे करेंगे? So if we want to make the protocol, we have to understand little bit. हमें थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा उसके लिए. तो पहले हम 4 कारण समझ गए, है ना? 4 कारण, और ये 4 कारण ध्यान में रखने दिमाग. We can't forget. The 2 are connected with the kidney. The 2 are connected with the kidney, first and third. In the first, kidney is not nourishing liver, and the third kidney deficiency creating bone marrow deficiency. तो 2 तो किडनी के कारण है. और जो दूसरा कारण है, फूड की कमी, नरिशमेंट की कमी,
and the fourth is the weakness of the channel. So 4 conditions you have to remember always. Why I'm telling you to remember? Now, there are many persons living in the same atmosphere, eating the same food. एक ही घर में रहते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही तरह के वातावरण में रहते हैं, लेकिन सबको तो नहीं होता पैरालिसिस. क्यों? Why? Because the one person is having kidney deficiency, so liver is not nourished. One person is having kidney deficiency, so bone marrow is not nourished. One person is having spleen deficiency because not taking nutritious food, nourishing food. And one person is having weakness of the channel. So then these person are sensitive for paralysis. यही व्यक्ति पैरालिसिस के लिए संवेदनशील है. सबको तो नहीं होती ना, है ना? किसी को हो जाती है, किसी को नहीं होती. बीपी तो कितने लोगों को हाई होता है. All the high blood pressure patient is not suffering with the paralysis. Okay. So the person is coming to us for the treatment of paralysis. First we have to see, okay. So for making the protocol, we have to consider few steps. हमें कुछ steps को समझना होगा. चलिए, मेरा iPad नहीं वर्क कर रहा है, तो मैं भी लैपटॉप में लिखूंगा, आपको इसमें से देखना है. So let's see here. So there are 4 conditions. Hello. जी, good evening. Actually, my class is going on, so you please message me, right? Okay. So I'm picking the call because sometimes I think some participant having some problems. Everyone can hear me properly. सब लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है? Okay. Fine. So now, so first we have to understand one condition. पहले हमें एक चीज को समझना होगा. The pathology of wind stroke. हमें सबसे पहले समझना होगा कि जब भी किसी को विंड स्ट्रोक होता है, तो पहले ये 4 हमें जो दिखाई दे रहे हैं पैथोजेनिक फैक्टर्स, इनके बिना पैरालिसिस नहीं हो सकता. सो देयर आर 4 पैथोजेनिक फैक्टर. Number 1, wind is responsible for paralysis. Number 2, fire might be responsible for paralysis. Number 3, flame might be responsible for paralysis. And number 4, blood stasis might be responsible for paralysis. So let's start from the wind. And it's very clearly, and we have to understand, they are playing the primary contribution. ये सारे के सारे key factors हैं. These are playing the role as a primary factors. At least 3 should be present for creating the paralysis. इन 4 में से 3 होना चाहिए, तो होगा पैरालिसिस. ऐसा जरूरी नहीं कि 4 हो, कभी कभी 2 भी कर सकते हैं. Sometimes only 2 might create the paralytic attack, but at least 3 are there, then there are greater chances to have the paralysis. If the wind is excessive, normal wind everyone need, without the wind we can't survive. Wind के बिना हम survive नहीं कर सकते. But the meaning of wind means movement. Because of wind, our blood is running. Because of the wind, all the movements is happening in the body. Because of the wind, I can speak, I can blink,
Wind is creating movement. But if his wind is very, very high, then it might create problem. जैसे हवा अच्छी है, लेकिन जब हवा आंधी तूफान का रूप ले ले, तो वही हवा घातक है। तो पहला जो पैथोजेनिक फैक्टर है, वो क्या है? विंड. If it is in the excessive condition. The second pathogenic factor is a fire. We know fire is very much important. Without the fire, we can't digest the food. Without the fire, we can't do anything. हम फायर के बिना, फायर ऑल्सो गिविंग अस जॉय. फायर हमको जॉय देता है, प्रसन्नता देता है, खुशी देता है ना. फायर हमें कुछ करने की, हमें नेम एंड फेम कमाने की ताकत देता है. फायर फायर हमें बोलने की भी ताकत देता है. तो बिकॉज ऑफ द फायर वी कैन स्पीक, राइट. बट इफ द फायर इज टू मच, डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए ग्रेट प्रॉब्लम. अगर फायर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ठीक नहीं, ये शरीर को जला देगी, हमारी सारी की धातुओं को जला देगी, पानी को सुखा देगी. द एक्सेसिव फायर ऑल्सो इज नॉट गुड एंड इट विल क्रिएट some problem. It will destruct the fluid of the human body, right? Because of the excessive fire, there might be bursting out of the blood vessels. हमारी blood vessels फट जाएगी, कहीं से bleeding हो जाएगी. The third pathogenic factor is flame. हम जानते हैं कि हमारे शरीर में humidity होना जरूरी है. We need humidity in the human body. The meaning of humidity is weight, like the muscle weight, muscles का वजन, ये सब ह्यूमिडिटी है. But the another form of the humidity, like the kapha, like the flame, like the dirtiness, like the dampness, which is not good, which might create blockages. Cholesterol creating blockage, that is also flame. So humidity also very good thing, but if it is in the wrong way, then it will create the problem. It will create the blockages. It will create the obstructions. It will create the occlusion. तो ह्यूमिडिटी क्या करेगी? यही रुकावट पैदा कर देगी. फ्लेम रुकावट पैदा कर देगा. तो ये हमारा तीसरा पैथोजेनिक फैक्टर होगा. The fourth pathogenic factor is stasis, or which is called blood stasis. जैसे चीजों का जम जाना. तो ब्लड स्टेसिस जब भी किसी पार्ट की होती है, उस पार्ट में दर्द होता है. और जहां, जैसे किसी को कमर में दर्द हो रहा है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, आप खूब पॉइंट लगा रहे हो, पर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा. सो इवन आफ्टर गिविंग मेनी ट्रीटमेंट, someone is not responding for the lower back pain, might be having blood stasis. So as soon as we remove the blood or move the blood, या तो ब्लड निकाल दो, ब्लड लेटिंग कर दो, कपिंग कर दो, या पॉइंट के माध्यम से ब्लड को मूव कर दो, ब्लड के पॉइंट लगा दो. So what I want to tell you, blood is good. Without the blood we can't survive. But blood stasis is creating very deeper level of the energy blockage. So there is a blockage in the heart, creating heart attack. There is a blockage in the brain, some capillary brain stroke. So blood stasis means stagnation of the energy. So there are 4 factors. ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं. तो हमने बात की, अगर इन 4 फैक्टर में से कोई भी 3 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, either the wind or the fire or the flame or the stasis means, or we can tell blood stasis, they will create the problem. तो ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं. The blood is very aggressive. The wind, fire, flame and blood stasis. So these are creating the paralysis. So these are the 4 factors. We can see here, if the wind is the role of the wind in the wind stroke. The wind stroke, it is name itself is a wind stroke. इसका नाम ही wind stroke है, right? So it is creating acute attack and the hemiplegia or the paralysis. Now we talk about the flame. So flame also creating lots of problems. We will be discussing the because of the flame.
द पर्सन इज सफरिंग विद एफेजिया, व्यक्ति को जब एफेजिया हो जाता है, बिकॉज फ्लेम इज डूइंग द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑरिफिसेस, ये चीजों को ब्लॉक कर देता है और व्यक्ति की आवाज चली जाती है। फ्लेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर numbness, tingling of the limbs and the aphasia. The main important thing here, aphasia is created by the flame. तो जब भी किसी की स्पीच चली जाए, आप थोड़ा फ्लेम पर वर्क करिए, वर्क ऑन द फ्लेम, राइट? द थर्ड फैक्टर, दैट इज द फायर. द फायर इज सब चीजों को सुखा देता है, आपकी हड्डियों को सुखा देगा, आपके टेंडन को, लिगामेंट्स को, शरीर के पानी को सुखा देगा. सो फायर इज डूइंग इंजरी ऑफ यिन, इट्स इंजरिंग द यिन. ये सब कुछ सुखा देगा. ये मल न्यूट्रिशन पैदा कर देगा चैनल्स के अंदर. जैसे धूप में आप पानी रख दो, उड़ जाएगा पानी. इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति धूप में ज्यादा बैठेगा तो एकदम ड्राई हो जाएगा, उसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, प्यास लगेगी क्योंकि पानी सूख जाएगा. द पर्सन इज हैविंग एक्सेसिव फायर, then the excessive fire will be responsible for drying the body, dehydrating the body, and responsible leading to the malnourishment of sinew. sinew का मतलब होता है हमारे जितने भी टेंडन्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, सब सूखने लगेंगे. फायर का नेचर है सुखाना, तो वी पैरालिसिस हो जाएगी. बिकॉज एंड द फोर्थ फैक्टर इज ब्लड स्टेसिस. The blood stasis is creating very severe type of the rigidity and the pain in the limbs. Remember, जब भी हमारे joints में rigidity आती है या दर्द होता है, तो वह किससे होता है? Blood stasis के कारण होता है. You have seen many person are like this. You want to bring it back, but they're not coming back. The very high rigidity. Very high rigidity is the result of blood stasis. So we have to understand these all things. हमें सारी चीजों को समझना होगा कि कौन सी चीज क्या पैदा कर रही है. So let's see once again. There are 4 factors: wind, fire, flame, and the blood stasis responsible for the wind stroke. At least 3 factors should be there, और कम से कम 3 फैक्टर हों. कभी कभी 2 फैक्टर भी ये कंडीशन पैदा कर सकते हैं. So if there is a wind attack, the person will get acute attack, sudden loss of consciousness and hemiplegia. यह तुरंत व्यक्ति को एकदम से अटैक आ जाएगा और उसे पैरालिसिस हो जाएगी because of the wind. The flame I told you will create aphasia. The flame में व्यक्ति की आवाज प्रभावित हो जाएगी और there is a slurred speech, right? And it is also causing numbness and tingling of the limbs. हमारे limbs के अंदर यह numbness और tingling को पैदा करेगा. The fire will be responsible for injuring the yin. ये yin को सुखा देगी and leading to the malnourishment. हमारी सारी धातुओं को सुखा देगी और because of the malnutrition, person will be suffering with the hemiplegia. The fourth cause, blood stasis. Blood stasis will affect the joints. There will be rigidity in the joints is because of the blood stasis. Okay. So I am giving you 2 minutes. Write down the 4 factors responsible for the paralysis and put in the group quickly. 2 minutes. चारों फैक्टर्स के नाम ग्रुप में भेजिए. Now, so tell me, the sudden attack of the paralysis, acute and sudden attack, is because of wind, fire, flame or blood stasis. Sudden attack, व्यक्ति को एकदम से हो गया, तो कौन से दोष के कारण हो सकता है कि व्यक्ति एकदम से उसे अटैक आया और अनकॉन्शियस होकर गिर गया? किस दोष के कारण हो सकता है? दैट इज विंड. वेरी गुड.
tell me, aphasia is created by, speech problem is created by which toxins, which pathogen? Aphagia, speech problem. कौन जिम्मेदार है स्पीच के लिए, स्पीच डिस्टरबेंस के लिए और स्लर्ड स्पीच के लिए? ध्यान रखिएगा, अगर आपकी आवाज को अच्छा बनाना है तो आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा होना चाहिए। अर्थ एलिमेंट यानी रिदम। तो जितने भी संगीतकार होते हैं उन सारे संगीतकारों का पृथ्वी अर्थ एलिमेंट काफी अच्छा होता है, राइट? सो if the earth element is not good, it will create phlegm and there will be slurred speech, and in this condition we are discussing wind stroke and it will create aphasia. Okay, very good. Now tell me, which is creating rigidity of the joints? वो कौन सा दोष है जो rigidity को पैदा करता है? Which toxins is creating rigidity of the joints? Now it is not only the condition of paralysis, even in the other diseases, if you find a great amount of the rigidity, that will be due to blood stasis. अभी हमारे पास एक पेशेंट आया था लिवर सिरोसिस का, सिरोसिस ऑफ लिवर, and he was also having very too much rigidity in the fingers. So we declared the liver blood stasis. We were treating the liver, we were treating the cirrhosis of the, we are treating the cirrhosis of the liver, but as per the acupuncture we will categorize it under the blood stasis. उसको लिवर का हम ट्रीटमेंट दे रहे थे, उंगलियों का ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे थे उसे, क्योंकि उसका लक्ष्य था लिवर को ठीक करना। लेकिन जब हमारे शरीर में ब्लड स्टेसिस होती है तो बहुत ज्यादा रिजिडिटी आ जाती है। इसी कारण से अगर कोई व्यक्ति बहुत रिजिड है तो वो ब्लड स्टेसिस के कारण हो सकता है। ट्रिगर फिंगर इज नॉट द रिजिडिटी, राइट? ट्रिगर फिंगर इज नॉट। Okay, trigger finger, we can understand the simple amount, but trigger finger is a different thing, right? Okay. The fourth factor, now tell me, numbness is created by which toxin? Numbness. Numbness किसके द्वारा की जा सकती है? Numbness of the numbness and tinglings. किसी को पैरालिसिस हो रही है और या फिर हो सकता है कि अभी पैरालिसिस नहीं हो रही है, अभी सिर्फ नम्बनेस हो रही है। That is also due to flame. Flame is creating numbness sensation, tingling sensation and the paralysis. Okay. अगर एक व्यक्ति एकदम पहले मल नरिश्ड हो गया और फिर पैरालिसिस हुआ, which toxin, which pathogenic factor might be responsible, creating malnourishment and the paralysis? So that is the fire. Very good, wonderful. So these are the 4 pathogenic factor. ये हमारे 4 pathogenic factor हैं जिनकी हमने बात की, right? अब एडिशनल फैक्टर, अब हमारे पास जो एडिशनल फैक्टर हैं वो कौन से हैं? Now these are the 2 factors remaining in the last. They are the deficient pattern. So number 1, the deficiency of the chi or and blood, which is very common in the female. The chi deficiency and the blood deficiency is very common in the female. Like female are losing the blood in the every menstrual cycle, and sometimes female is having malnourishment and having blood deficiency, and some female is having some problems and having blood deficiency, maybe because of anything. So first factor is common in the female. Second factor, yin deficiency, is common in the male.
yin deficiency is very, very common, like the kidney yin deficiency, liver yin deficiency, common in the male. Now tell me, मैंने आपको मेल फीमेल की बात बताई, इसका क्या अर्थ है? क्या मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि फीमेल को सेकंड फैक्टर नहीं होगा? क्या फीमेल को सिर्फ ची और ब्लड डेफिशिएंसी होगी? क्या फीमेल को yin डेफिशिएंसी नहीं होगी? क्या मैं आपसे ऐसी बात कह रहा हूं? Whether I'm telling like that? No. Male and female both might suffer with the both pattern, whether the pattern number 1 or the pattern number 2, whether the blood deficiency, chi deficiency, or the yin deficiency. I'm talking about the common factor, right? हम common factor की बात कर रहे हैं. So now these are the two deficient pattern. ये दो deficient pattern हैं. इनके कारण भी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये भी आगे चलकर पैरालिसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं. ये दोनों डेफिशिएंसी पैटर्न है. सो यू हैव टू रिमेंबर these 6 factors, the first 4 factor and the last 2 factor. ये आपको सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे. ओके, नाउ whichever the factor, अब कोई भी फैक्टर हो, whether the wind or the flame or the fire or the blood stasis or the chi blood deficiency or the yin deficiency, अब कोई भी फैक्टर हो, अब हमारे पेशेंट को तो हो गई है पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया. हमें तो ठीक करना है उसका हेमिप्लेजिया, चाहे वो किसी भी कारण बस हुआ हो. Whatever the cause, we don't know. Whatever the cause, we will do analysis, we will do assessment. So now patient sitting in front of you, then we are doing the assessment of the pattern. अब हम पैटर्न का असेसमेंट करते हैं और 2 कैटेगरी बनाते हैं. लेट्स सी नाउ. Okay, so let's see. 1 minute. So 1 minute now. Hello. Yes. Okay. Yes. So now, whoever the patient comes to us, we will categorize all the patient just in 2 patterns. हम बस 2 पैटर्न बना दें. The pattern number 1, and the pattern number 2. We will classify our patient in the 2 patterns only. हम केवल 2 पैटर्न की बात करेंगे. The pattern number 1 is very severe, very severe. The pattern number 2 is less severe. ये थोड़ा सा कम खतरनाक है. दूसरा पैटर्न. क्या पवनजी सो गए क्या? जाग रहे हो ना? जागते रहो. अभी सोना अलाउड नहीं है. पवन जी रोज सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्राणायाम करते हैं ना, सुबह उठ के. चलिए, फाइन. So now we will divide the patient in 2 categories. One is a very, very severe, one is a less severe. हम 2 ही कैटेगरी बनाएंगे बस, चाहे कोई भी कारण. We will see what is severe. Severe means if attack on the organ.
एंड लेस सीवियर मीन्स इफ अटैक ऑन द मेरिडियन, अगर मेरिडियन में अटैक हुआ तो थोड़ा लेस सीवियर। सो वी विल डिवाइड ऑन इन टू पैटर्न्स, हमने केवल दो पैटर्न्स में डिवाइड कर दिया। द पैटर्न नंबर 1 वेरी सीवियर and the pattern number 2 that is a less severe, right? The two patterns. Attack on the organ, or we can refine this sentence that attack on internal organ, and the second attack on the channel or meridian or channel. तो बस ये दो कैटेगरी हमारी, ठीक है जी। इफ द अटैक ऑन द इंटरनल ऑर्गन, अगर किसी के इंटरनल ऑर्गन में अटैक हुआ है, so the definitely person might suffer with the wind stroke, अनकॉन्शियस हो जाएगा व्यक्ति। जैसे wind has attacked, fire has attacked, flame has attacked, blood stasis has attacked, and there is a problem because of the chi blood deficiency or the yin deficiency, whatever the cause, कारण कुछ भी हो। लेकिन अगर पहला कारण हुआ तो ये सीवियर है, और दूसरा कारण होगा तो लेस सीवियर है। Now we will divide this paralysis in two parts. We already have discussed टेंस टाइप पैरालिसिस एंड फ्लैसिड टाइप पैरालिसिस। इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि एक तो टेंस की प्रकार की पैरालिसिस, टेंस का अलग प्रोटोकॉल बनेगा और फ्लैसिड का अलग प्रोटोकॉल बनेगा। और देखिए ये प्रोटोकॉल बनेगा, है ना। तो ये जो सीवियर वाली कैटेगरी में हमारी ये पैरालिसिस आएगी टेंस एंड फ्लैसिड। कि टेंस का मतलब है कि व्यक्ति को जो पैरालिसिस हुआ तो पूरी बॉडी टेंस हो गई, माउथ क्लोज, फिस्ट क्लोज्ड, body very tense, body closed, there is rigidity, spasm, that is tense type of the paralysis. Flaccid type of the paralysis means low open mouth, open orifices, stool is passing, urine is passing out, open hand, open mouth, that is open type, flaccid type paralysis. तो दो प्रकार की होती है, टेंस में वो पकड़ लेता है सारी चीजों को, ऐसे टेंस कर लेता है, और फ्लैसिड में ऐसे सब लूज कर देता है क्योंकि ताकत नहीं होती पकड़ने की, राइट। फाइन। सो इन दिस कंडीशन दिस इज कमिंग अंडर द सीवियर कैटेगरी, ये हमारी सीवियर कैटेगरी में आती है। सो व्हाट विल हैपन हियर, यहां क्या क्या होगा, ये दो हमने बात की पैरालिसिस की, यहां पर क्या क्या होगा इस कैटेगरी में। If the attack on the internal organ, this is a severe type, and this is the less severe type. So attack on the internal organ, the patient will become unconscious, or we are telling there is a wind stroke, or we are telling there is a hemiplegia, or there is a speech problem, we know speech problem, is aphasia, speech problem, aphagia, ये सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। Unconsciousness, this is the wind stroke, unconsciousness, hemiplegia, speech problem, ये कुछ भी हो सकता है। और लेस सीवियर टाइप की अगर हम बात करें, ये कम सीरियस है, लेकिन पैरालिसिस तो यहां भी हो रही है ना। अब इसमें थोड़ा कम सीवियर होगी, हेमिप्लेजिया तो यहां भी होता है, हेमिप्लेजिया। रिगार्डिंग द स्पीच माइट बी स्पीच, पहले में तो स्पीच चली गई, इसमें स्पीच पूरी नहीं गई, स्लर्ड स्पीच हो गई, स्लर्ड स्पीच, थोड़ी स्पीच डिस्टर्ब हो गई,
बिकॉज इट्स लेस सीवियर। और कभी कभी व्यक्ति को बस क्या हुआ, नमनेस आ गई, बस इतना ही हुआ कि पैरालिसिस नहीं हुई लेकिन नमनेस आ गई, नम्बनेस। सो इट इज लेस सीवियर, नमनेस इन नमनेस समवेयर। तो देखिए ये दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू कंडीशन। कि पहले बहुत तेज है, अनकॉन्शियस हो गया, हेमिप्लेजिया हो गया, स्पीच चली गई। दूसरी कम तेज है जिसमें हेमिप्लेजिया थोड़ा कम खतरनाक हुआ, हेमिप्लेजिया लेस सीवियर। स्लैंट स्पीच हो गई भाई, आवाज नहीं गई, थोड़ी बिगड़ गई और नमनेस आई, ये है लेस सीवियर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन two type of the paralysis, one in the organ, internal organ, which is very severe, and one on the channel? Getting understanding everyone? कभी कोई बोलेगा कि मेरे को सिर्फ फेस पे नमनेस आ रही है, चैनल्स की बात है, सिर्फ चैनल को ठीक करना, लेस सीवियर, बट इग्नोर नहीं करना है, राइट? वी हैव टू वर्क ऑन दैट। Then you have to think wind is high, fire is high, flame is high, or blood stasis, or chi is deficient, blood is deficient, yin is deficient. You have to go through with all the factors कि आखिर इसको चेहरे पर नमनेस क्यों आ रही है भाई। या तो चार में से कोई बढ़ गया, या ये दो में से कोई कम हो गया। Person is telling, oh, when I am working in the kitchen, there is a numbness in my hands. Oh, numbness in the hands. Again, wind is high or the fire is high. Okay, flame is high or blood stasis or the cheap blood deficiency or yin deficiency. Again and again, you go through with all these 6 factors, then there might be combination of many factors. Then find out the factors and treat. अभी हमारे एक कांटेक्ट में एक लड़की आई थी, मे बी तो एक 25-26 years young girl, and she is having numbness on the face. She is a physiotherapist. She herself is a physiotherapist. उसके चेहरे पे है numbness. We did the assessment and we found that she is very weak. She is having little weak constitution. उसका जो constitution है वो थोड़ा weak है. Finally we declared that she is having blood deficiency, chi and blood deficiency. उसको chi and blood की कमी है, किसी को yin की कमी हो सकती है, right? And person is suffering with some problem. So it's not only about the paralysis, it about any conditions. ये कोई भी कंडीशन अगर हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, द पर्सन इज हैविंग स्लर्ड स्पीच, किसी की आवाज ठीक से नहीं निकलती है, so there might be attack of pathogenic factors on the meridian. पैथोजेनिक फैक्टर ने आक्रमण किया कहां पर, मेरिडियन पर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेनिक फैक्टर? पैथोजेनिक फैक्टर मींस विंड, फायर, फ्लेम, blood stasis, chi and blood deficiency, yin deficiency. They are the pathogenic factors. They have attacked, right? Okay. So now, in this way, in the both condition, person is getting paralytic attack. Now, second condition. The first condition is tense type and the flaccid type. We will be exploring it in the detail. Now, the second condition is very mild, very less severe type or mild type of the paralysis. ये कैसी है? Mild type of paralysis. So remember one thing, without the proper diagnosis, treatment will not be good. Paralysis is the mild type of the paralysis. This is pattern number 2. Like pattern number 1, we have divided into part. Pattern number 1 को तो हमने 2 भागों में बांटा है, जो बहुत ही सीवियर टाइप का है, tense and flaccid.
In the same way, we talk about the pattern number 2. अगर हम पैटर्न नंबर 2 की बात करें तो देखेंगे भाई अटैक चैनल्स में हुआ है, अटैक मेरिडियन में हुआ है। इसे भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे। ओके, फाइन, एग्री द अटैक ऑन द मेरिडियन, विल आस्क ओके, अटैक ऑन मेन मेरिडियन और अटैक ऑन लियो चैनल्स, अटैक ऑन मेन मेरिडियन और द मेन चैनल, और अटैक ऑन लियो चैनल्स और द लियो मेरिडियन, क्योंकि हमारे शरीर में लियो मेरिडियन भी होते हैं, लियो चैनल्स भी होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे हार्ट का लियो पॉइंट हार्ट 5 है, तो वो लियो बेसल्स होती है, वो टंग तक जाती है, उसका भी रास्ता होता है अपना। वी आर हैविंग लियो चैनल्स। सो नाउ ओके, लेस सीवियर मींस अटैक ऑन द मेरिडियन। सो द क्वेश्चन कम्स, ओके टेल मी, in the main meridian or on the Leo meridian, Leo channels, there is a question we have to raise. Fine. So now question comes, okay, attack on the main meridian, whether the attack on the main meridian or attack on the Leo meridian, we don't have to worry. But still attack on the main meridian, it will create paralysis, it will create hemiplegia. Maybe less severe, but hemiplegia. Hemiplegia or might be hemiparesis. Hemiparesis मतलब नमनेस टाइप, ऐसा कुछ नमनेस जैसा होना, राइट। तो ये भाई अटैक मेन मेरिडियन में हो गया, तो भाई पैरालिसिस तो होके रहेगा। लेकिन अटैक अगर लियो चैनल में हुआ तो भाई नमनेस से काम चल जाएगा, केवल नमनेस, द ओनली नमनेस। सो समटाइम इफ द पर्सन इज सफरिंग विद द numbness, there might be only the condition of attack on the Leo channel. Just we have to work on the Leo channel. हमें बस Leo channels को बैलेंस करना है, राइट। मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखा रहा हूं, फिर मैं पूछूंगा, लुक एट दिस एंटायर थिंग एंड मेमोराइज। ओके, नाउ टेल मी, अगर लियो चैनल्स में होगा तो क्या होगा? राइट डाउन इन द ग्रुप और चैट बॉक्स। अगर लियो चैनल्स में होगा अटैक तो क्या होगा? केवल 4-5 लोग ही लिखते हैं बस, 1-2, श्वेता जी, सुकृति जी, रितिका जी, ससद बेगम जी, सेना जी, और बाकी सब लोग कहाँ गए भाई? 4 लोगों ने लिखा बस। और 80 बंडल वाले तो सब कहाँ चले गए? 80 बंडल वालों, हाँ 80 बंडल वालों को तो क्या है ना, इतने सारे कोर्स है ना, तो वो कुछ लिखते ही नहीं है, लगता देख लेंगे आराम से, बात नहीं। लिखो भाई, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ चैट में लिखा है आपने, चैट वाले वेरी गुड, जो फास्ट लिखते हैं वो चैट में भी लिख देते हैं, वेरी नाइस। लिखो लिखो थोड़ा सा। अरे नहीं, बहुत लोगों ने लिखा है, अरे अरे चैट बॉक्स तो वेरी गुड वेरी गुड, अरे वंडरफुल। अब अगर लियो चैनल पर आक्रमण हुआ तो नमनेस होगी। इफ द, नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 2, if the attack of pathogenic factor, maybe 4 factor or the 2 deficient factor, any factor on the main channels, but still on the channel, on the meridian, not in the organ,
तो क्या होगा बताइए। वाह, वंडरफुल, जीनियस, वेरी नाइस। हेमीप्लीजिया, हेमीपैरालिसिस, लेस सीवियर है ना, लेस, वेरी गुड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। If the attack of pathogenic factors happening in the internal organ, what will happen? अगर इंटरनल ऑर्गन पर हुआ तो क्या होगा? यस, वेरी नाइस। अनकॉन्शियसनेस, फ्लैसिड और टेंस पैरालिसिस, वेरी गुड अशोक जी, कावेरी, वेरी नाइस। नाउ the question comes, why the person suffering with tense, why the person is suffering with a flaccid? आखिरकार इसका कारण भी समझना होगा कि किसी व्यक्ति को टेंस टाइप की पैरालिसिस हो जाती है, किसी व्यक्ति को फ्लैसिड टाइप की पैरालिसिस होती है। आखिर पैरालिसिस ये कैसे डिसाइड करती है कि मुझे कैसा होना है? सोचिए, पैरालिसिस कैसे डिसाइड करती है कि इसकी बॉडी में मैं टेंस टाइप की हो जाऊंगी और इसकी बॉडी में मैं फ्लैसिड टाइप की हो जाऊंगी? हाउ द पैरालिसिस टेक द डिसीजन? इन सम बॉडी there is a tense type of the paralysis, and in some body there is a, yeah, definitely depend on the constitution. So the tense type of the paralysis and the flaccid type of the paralysis. So let's see this. If there is a collapse of yang, अगर yang collapse हो गया, तो yang का काम क्या है? ध्यान रखिएगा, अगर किसी का yang collapse हो गया, आप सोचिए yang का काम क्या है? yang means circulation, yang means वो ताकत जो हर दरवाजे को बंद करता है, खोलता है। Because of the yang, we can close the anus. Because of the yang, we can close the urinary path. Because of the yang force, we can close all the sphincters. हमारे शरीर के जितने भी स्फिंक्टर हैं, जितने भी दरवाजे हैं, हम yang की ताकत से बंद रखते हैं, है ना। yang दरवाजे पर खड़ा हुआ एक द्वारपाल है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी रास्ते में हैं और आपको स्टूल, अब आपको जोर से पॉटी आ गई, आपको लग रहा है अब जाना पड़ेगा, अब क्या करें? लेकिन आप रोक सकते हैं ना, यू कैन होल्ड योर स्टूल फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ द yang is controlling your sphincter. If yang is deficient, you will not able to hold the stool, you will not able to hold the urine. So if yang is deficient, then all the holes and pores will open. इसीलिए जब yang deficient होता है तो खूब पसीना निकलता है, पानी की तरह बहता है, सारे पोर ओपन हो जाते हैं, स्टूल पर कंट्रोल नहीं रहता, अर्जेंसी ऑफ यूरिन होती है, फीमेल्स को लीकोरिया होता है, राइट। So if there is a collapse of the yang, it will create flaccid type paralysis. There is no any control. So that is a collapse of yang is creating flaccid type of the paralysis. Now regarding the tense, in the same way, if there is a collapse of yin, अगर yin collapse हो जाए,
यिन का काम क्या है? यिन का काम है नरिशमेंट, यिन का काम है स्मूथनेस, है ना, थोड़ा एक वो देना, स्मूथनेस, लुब्रिकेशन। जैसे पानी का काम क्या है? ग्रीस का काम क्या है? ग्रीस लगाते हैं ना, ताकि थोड़ा सा जो पहियों में ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, ऑयल डू लुब्रिकेशन, yin doing lubrication, yin is the fluid, right? अब किसी का yin पूरा निकाल दो तो टेंस हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक लकड़ी है, आपने लकड़ी देखी, नीम की लकड़ी है ना, एकदम पतली फ्लेक्सिबल, ऐसे मुड़ जाएगी, है ना, लेकिन जब सूख जाएगी ना तो मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी। सो इफ द yin is there, thing is flexible, fluid is there, thing are flexible, but the fluids are not there, yin is not there, then things become rigid, तो चीजें कड़क हो जाती हैं। जैसे कोई भी लकड़ी जब सूख जाती है तो कड़क हो जाती है कि नहीं हो जाती? लकड़ी सूखने पे कड़क होती है ना, क्यों कड़क होती है? और उसमें पानी में रख दो तो एकदम लूज हो जाती है, राइट? सो इन दिस वे, इफ देयर इज अ कोलैप्स ऑफ yin, yin निकल गया पूरा, it will create tense type of the paralysis. Yeah, I'm repeating in the English. So yin, like suppose there is a some neem stick or any stick having enough fluid inside, and it will be very flexible. But once fluid is dried, the stick become rigid. So the flexibility is coming because of the water content, fluid content. If the fluid is not there, if the water is not there, then things become tense and rigid. So if there is a yin collapse, if there is a yin deficiency, it will create tense type of पैरालिसिस। तो टेंस टाइप की पैरालिसिस होगी। इतना समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर? क्लियर? कोकिला जी इज क्लियर? कोकिला जी, यस? कोकिला जी, कावेरी जी, यस? ओके, क्लियर, ओके फाइन। तो आज हमने इतना समझा है, अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे टेंस की और फ्लैसिड की, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देन विल अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट in the next class. Okay, so done for today. Let's close the session. See you in the next class. Good night. क्या दिखाएं भाई? show the slide. Okay, look at the slide. Done. ये चार्ट याद होना चाहिए कल तक पूरा फुल, क्योंकि अब मैं आपको बोलूंगा कि टेंस टाइप की पैरालिसिस है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये तो खत्म ही हो गया है ना, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आएगा तो आप प्रोटोकॉल भी बना लोगे, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ भाई, टेंस टाइप का पैरालिसिस है, देयर इज अ टेंस टाइप ऑफ द पैरालिसिस। ओके, लेट्स इंक्रीज द yin. So once you understand the root cause, once you understand the root things, then you will able to make the right protocol. Yes, fine. Okay, so good night, thank you so much, let's see in the next class.